गणतंत्र गरिमा को प्रति नागरिक जोड़ी धरी गणतांत्रिक व्यवस्था रे प्रति नागरिक देश निर्माण दायित्व समर्पित होती ही प्रकृत क्षमतार केन्द्रबिंदु कारण से बहुमूल्य भोटदान द्वारा से प्रतिनिधि बाछंती जो मैंने गणतांत्रिक भावधारा को वितरण कर देश निर्माण करती एवं जातीय मतदाता दिवस यह उपर एक सचेतनता दिवस आज एभली एक भव्य समावेश वरेण्य अतिथि निकट में कृतज्ञता अर्पण कर अनुरोध करूँ आज भव्य समावेश आम पुष्पचारा प्रदान पूर्वक आज भव्य समावेश स्वागत जनाइबू to take the privilege to present something to Honorable Chief Guest and other dignitaries in the dais as a token of love and appreciation to their gracious presence. These somethings have been presented to Honorable Governor of Odisha and other dignitaries. We are extremely grateful to Honorable Governor, and also we are having the gracious presence of Sri Aditya Prasad Patil, State Election Commissioner, Sri Nikunja Bihari Dhawarji, Additional Chief Secretary and CEO, and also we are having the presence of N. Tirumala Nayak, Additional CEO, and also Sri K. Subhashan Chakrabarti ji, District Election Officer, Khordha. Now, as you know, every auspicious occasion commences with the lighting of the ceremonial lamp, and this occasion is not an exception. I take the privilege to request Honorable Governor and other dignitaries to kindly light the ceremonial lamp to mark the opening of the state level National Voters' Day. प्रदीप प्रज्वलन सहित राज्य स्तरीय जातीय मतदाता दिवस 14तम संस्करण अनुष्ठान शुभारंभ कर महामान्य राज्यपाल महोदय सहित वरिष्ठ अधिकारी निकट में आम कृतज्ञता अर्पण करुँ. आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू रिक्वेस्ट श्री निकुंज बिहारी धाड़जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एंड चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ ओडिशा, टू काइंडली प्रेजेंट द वेलकम एड्रेस. राज्य स्तरीय जातीय मतदाता दिवस समारोह मुख्य अतिथि ओडिशा मान्यवर राज्यपाल श्री रघुवर दास महोदय, सम्माननीय राज्य निर्वाचन कमिश्नर श्री आदित्य प्रसाद पाढ़ी महोदय, मोर सहकर्मी बंधुगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया प्रतिनिधिगण, श्रद्धेय नूतन मतदाता एवं भूस्तरीय अधिकारीगण, सुधीवृंद, मु सर्वप्रथमे आपण मानकु एवं राज्यर 3,32,00,000 मतदाता को आज दिवस अभिनंदन जनाऊँ. ये जो जातीय मतदाता दिवस इटा दिल्ली टू पल्ली सबुठी पालन करा जाउछि. आज हम राज्य स्तर में पालन करा जाउछि, जिला स्तर में पालन करा जाउछि एवं प्रत्येक बूथ स्तर में पालन करा जाउछि. बहुत खुशी कथा माननीय राज्यपाल महोदय आज आम घर उपस्थित अछंती. मो तरफ एवं आपण मान समस्त तरफ हार्दिक स्वागत जनाऊछि. आज यही कार्यक्रम आदरणीय राज्य निर्वाचन कमिशनर सम्माननीय अतिथि भाव जोग हार्दिक स्वागत जनाऊँ. Democracy and voting are closely interlinked, like two sides of a coin, one complementing the other.
In a democratic system, citizens participate in the decision making and policy making through the process of voting. It allows people to express their preferences, elect their representatives, and influence the policies of the nation and the state. Voting is a fundamental mechanism that sustains the democratic process. Hence, in the democracy, the biggest stakeholders are the citizens themselves. They hold the ultimate power through voting. In fact, Election Commission has decided to celebrate the voters through observations of the meeting, National Voters' Day, at village level, district level, state level, and the national level. No doubt other stakeholders like political parties, elected officials, the media, and other interest groups also play a significant role in the democratic process. Each group contributes to strengthening of the democratic system. In fact, Honorable Governor, before coming to this hall, he inaugurated a photo exhibition. In fact, one of our panels in the photo exhibition is exclusively dedicated to the booth level officers. In fact, booth level officers, we call them, they are the unsung heroes of the democracy. आमे तो ओडिया रे कहूँ बूथ स्तरीय अधिकारी सी हेले आम गणतंत्र सजाग प्रहरी. Indian elections have a rich history dating back to the first general elections in 1951-52. We have put some photographs of the first general election also there in the exhibition. I would request you to please have a look at the exhibition before you leave. The Election Commission of India was established on 25th of January 1950 on this day to conduct free and fair elections. Over the decades, India has seen regular parliamentary and assembly elections, which is a testimony to the robust election machinery led by the ECI at the national level, the CO's office at the state level, the district election officers at the district level, the returning officers and the electoral registration officers at the assembly constituency level, and then the booth level officers at the village level. Throughout this journey, Indian elections have showcased the diversity and complexity of country's political landscape, reflecting the democratic spirit of the world's largest democracy that we know. 2024 is an important electoral year. In fact, including India, about 60 countries, 60 democracies will be going to polls this year. No voter to be left behind has been the motto behind the electoral roll revision work. That is a continuous process. While updating and revising the electoral roll, we ensure that it is inclusive. It includes young electors, it includes the particularly vulnerable tribal groups, it includes the women, it includes the transgenders, even it includes the homeless. So we are today awarding 3 district election officers and 5 electoral officers who have done meritorious work during the special summary revision of electoral roll that was completed recently. During the process, we involved all stakeholders and followed transparent processes while updating and revising the electoral roll. As I said, we have given special attention to the young electors, the women, the PVTT, the transgenders, and the homeless. During 2023 itself, the gender ratio in our electoral roll has improved from 961 to 972. The number of young electors in the 18-19 years age group is the highest in last 5 years. We launched Movie Mita campaign in colleges and universities to maximize the enrollment of students, particularly the girl students. We are committed to providing happy experience to all voters in the 2024 general elections. In fact, our tagline is Vote Debar Anubhuti
अटे अतुलनीय 2000 साधारण निर्वाचन में मु भोट देवी निश्चय मु आपण मानक अनुरोध करुच्ची आमर ये वार्ता जेपरी प्रत्येक भोटर मान पाखे पहुंचे से आपण आम सहित भागीदार हे धन्यवाद। जय हिंद, वंदे उत्कल जननी। राज्यर अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव एवं राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी माननीय श्री निकुंज धड़ महोदय स्वागत संबोधन आम कृतज्ञता अर्पण करुचु। मंच में आसीन अच्छा मान्यवर राज्य निर्वाचन आयुक्त माननीय श्री आदित्य प्रसाद पाढ़ी महोदय ए समावेश आज 14तम जातीय मतदाता दिवस वर्णाढ्य समावेश निजर उद्बोधन रखिए माननीय श्री आदित्य प्रसाद पाढ़ी महोदय। His Excellency, Honorable Governor of Odisha, Chief Electoral Officer, Shri Nikunja Dhara, Additional CEO, Shri Tirumala Nayak, Collector Khurda, Shri Chakravarti, ladies and gentlemen. It is my proud privilege to be present here today on the occasion of the National Voters' Day. This day acquires more significance as we are on the verge of holding the general elections to the State Assembly and to the Lok Sabha in just a few months' time. India, the world's largest democracy, held its first general election in 51-52. In his Independence Day broadcast to the nation on 14th August 1951, our first president, Bharat Ratna Dr. Rajendra Prasad, had said, and I quote, "Much more important than the integration and the standardization of the constituent states of the Republic is the great democratic election which is going to be held within a few months from now. It would be unparalleled in the history of the world." He goes on to tell the voters, and I quote, "You have the power of gods, and let me hope you will use it like gods." This was how our first president, Dr. Prasad, exhorted the voters to exercise their franchise in all sincerity and seriousness in the first general elections. The history of the last 75 years has vindicated the implicit trust that Dr. Prasad and other founding fathers of the Constitution had shown in the people of India. As has already been explained by the CEO, the National Voters' Day was initiated by the Election Commission of India to encourage the active participation of citizens in the election process by educating them about their rights and responsibilities. And particular emphasis is being laid on the participation of youth voters and first-time voters in the electoral process. Over the past few years, the ECI has taken a number of voter engagement initiatives leading to an increasing level of voter participation. Participation of women voters, for instance, has increased steadily from 45% in 51-52 to 67% in 2019. It is heartening to see that the voting percentage in Panchayat elections has also been showing a steady increase in the past 10 years. In 2022, it was around 79%, increasing from 73% in the 2012 Panchayat elections. This shows that voter awareness is increasing steadily. Unfortunately, the same cannot be said about the urban areas, where voting percentage was only 61% in the last urban elections held in 2022. At the national level also, there is a divide in the voting patterns. For instance, in the 2019 general elections, the voting percentage ranged from 70% in rural to 64.5% in urban constituencies. A similar trend is seen throughout the country in elections to the state legislatures also.
it is important to see that this apathy among urban voters is addressed and we have better outcomes in the future. The National Voters' Day is not simply a ritualistic event, but a call to action. Through the various activities carried out on this day, it gives everyone an opportunity to reflect on the significance of voting as a civic duty and look at it as a tool to bring about a positive change in society. Greater participation by all eligible voters is essential to the democratic process. There are countries like Australia which have the concept of compulsory voting for all citizens, and those who do not participate in the voting process are liable to penalties and like fines. It is not possible to think of such a process in our country because of the practicalities involved, but it shows how seriously some countries treat the democratic process. It is heartening to note that the ECI has taken so many steps to include new voters and left out voters in the process. For instance, the rules have now been amended, and in the next general elections, steps have been taken to allow for postal ballots for those above 80 years and also for PWD voters. This is a very significant move and should ensure better participation of the older voters. I am very happy to know that the CEO Odisha has taken a decision to felicitate the DEOs and EROs for their meritorious performance in the special summary revision of Photo Electoral Roll 2024. And I congratulate all the awardees. I also wish them good luck for their future endeavors. I also congratulate all the new voters who will receive their epics today, and wish that other youth follow them in enrolling as voters. I congratulate the BLOs in the state who have done excellent work during the special summary revision of the Photo Electoral Roll 2024. I understand that Odisha was one of the first states to publish the electoral rolls for 2024. On this occasion, I wish that all the DEOs, SPs and ROs shall ensure free, fair, peaceful and inducement-free general elections 2024. In conclusion, I would like to congratulate the ECI for all the steps it has taken to include all eligible voters in the all eligible persons in the voters list, and also to ensure better participation in the voting process. Happy National Voters' Day to everybody. Vande Utkal Janani, Jai Hind. We are extremely grateful to Sri Aditya Prasad Padi, Honorable State Election Commissioner Odisha, for his inspiring address. Now we are all set to distribute EPIC's electoral photo identity card to the new voters by our esteemed guests on the dais. यापरे मंचमंडन करितवा वरण्य अतिथिଙ୍କ करकमଳରେ भोटर फोटो परिचय पत्र प्रदत्त हेब आमे से बंधुमान को मंच को आमंत्रण करिबो। प्रारंभ रे आमे स्वागत करिबो जो माने नूतन भोटर नुआकरी जो माने तालिकाभुक्त होइछन्ति सेमानक मध्यरे पुरुष वर्गरे ओंकार दास को आमे मंच रे स्वागत करिबो। 18 ରୁ 19 वर्ष भितर अनेक भोटर माने तालिकाभुक्त होइछन्ति जेमानक मध्यरे ओंकार दास को आमे मंच को स्वागत करूछु। मंच रे पर प्रस्तुत रहिबे पीयूष प्रधान। नूतन भाव में भोट देवाई से स्वीकृति लाभ करुथिबारु भोटर फोटो परिचय पत्र प्रदत्त होइछि। सरकारी माध्यम रे आमे स्वागत करूछु पुरुष वर्ग अंतर्गत श्री पीयूष प्रधान को। जीवन में प्रथम करी भोट देवार अनन्य एवं विरल अनुभव को साउंटी से उत्साहित अछंती एवं आज वरेण्य अतिथि ठारू भोटर फोटो परिचय पत्र ग्रहण कर उल्लसित आम स्वागत करूँ। श्री उमाशंकर शतपथी को
ଶ୍ରୀ ଉମାଶଙ୍କର ଶତପଥୀ ନୂତନ ଭାବରେ ଭୋଟର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଉମାଶଙ୍କର ଶତପଥୀ ପରେ महिला वर्गरे आम अंचल परवीन को स्वागत करूँ एवं प्रतिज्ञा प्रभा पंडा सुश्री प्रतिज्ञा प्रभा पंडा एवं यहाँ पर आम आपण को पुणी थे कही रखू नूतन भाव भोट देवार अधिकार पाई से उल्लसित अच्छा आम से स्वागत करुचु ट्रांसजेंडर वर्ग में स्वागत करूँ नुपुर किन्नर को स्वागत करूँ नूतन भाव तालिकाभुक्त होता तरुण भोटर मान को स्वागत करने ट्रांसजेंडर पर्यायर नुपुर किन्नर सौम्या किन्नर प्रवीणा किन्नर एवं ज्योति किन्नर को हमें मंच में स्वागत करूँ किन्नर वर्ग में नुपुर किन्नर सौम्या किन्नर प्रवीणा किन्नर ज्योति किन्नर ज्योति किन्नर पर श्रुति किन्नर आराध्या किन्नर रीता किन्नर कृष्णा किन्नर दीप्ति किन्नर सहित लिपि किन्नर उपस्थित रही वरण्य अतिथि ग्रहण करेंगे इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड वोटर फोटो परिचय पत्र एवं आसुवा निर्वाचन में से भोट देवाई समर्थ एवं से अधिकृत आज से वोटर फोटो परिचय पत्र ग्रहण कर उल्लसित से अनेक अनेक अभिनंदन जनाऊँ आम कृष्णा किन्नर दीप्ति किन्नर लिपि किन्नर को वरण्य अतिथि भोटर फोटो परिचय पत्र ग्रहण करुवर से अनेक अनेक अभिनंदन जनाऊँ स्वागत करूँ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स फ्रॉम केउंझर आसीथिबा से पीपीटीजी से बंधु मान को आम मंच स्वागत करूँ ललिता ज्वांग सविता ज्वांग कविता ज्वांग सिद्धांत ज्वांग पदु ज्वांग एवं आशुतोष दास केउंझर आसीथिबा पीपीटीजी ग्रुप मेंबर माने जो माने भोट देवाई अधिकृत होगापी जाऊँगी इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड एपिक ग्रहण कर भोटर फोटो परिचय पत्र अतिथि करकमल ग्रहण कर मतदान व्यवस्था भितर निजक संयुक्त कर मतदान अनुभूति वास्तविक अतुलनीय एवं 2024 निर्वाचन में से भोट देवाई जाऊँ अधिकृत हुई भोट देवाक जाऊँ राष्ट्र निर्माण प्रतिनिधि मान को बाछा जाऊँ से अनेक अनेक अभिनंदन जनाऊँ केउंझर पीपीटीजी ग्रुप ललिता ज्वांग सविता ज्वांग कविता ज्वांग सिद्धांत ज्वांग पदु ज्वांग और आशुतोष दास को अनेक अनेक अभिनंदन जनाऊँ दिव्यांग वर्ग में शुभस्मिता दास एवं सरस्वती नाथ आपण मान विपुल करताली दिव्यांग भी
ଜାତୀୟ ମତଦାତା ଦିବସରେ ଆଜି ବରିଷ୍ଠ ଅତିଥିଙ୍କ ଠାରୁ ଭୋଟର ଫଟୋ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସୁକତା ରହିଛି ଆଜି ତାହା ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି এই ভোটর ফটো পরিচয় পত্র বরেণ্য অতিথিଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସୁସ୍ମିତା ଦାସଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ସରସ୍ୱତୀ ନାଥ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ଏହାପରେ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭାବରେ ଭୋଟର ଫଟୋ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଅଧିକୃତ ଭୋଟଦାତା ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ ରହି ଗୋଟେ ଦଳଗତ ସ୍ଥିରଚିତ୍ର ଏବଂ ଚଳମାନ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନରେ ସେମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବେ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ସେମାନେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଅବସରି ଯିବେ ଏବଂ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ଏହି ନୂତନ ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ତରୁଣ ବର୍ଗ ଯୁବବର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏପିକ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ଫଟୋ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ ସେମାନେ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫରେ ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ Now we are going to felicitate the district election officers and electoral registration officers for their remarkable contribution. Now I would like to request Mrs. Monisha Banerjee, who will be felicitated by Honorable Governor and all other dignitaries in the dais, for the meritorious performance medals is going to receive, and Monisha Banerjee IAS, District Election Officer and Collector Bargarh, is being given this medal in recognition to her sincere efforts towards improvement of health of the electoral roll during the special summer revision 2024 in Bargarh district. And she is receiving the silver medal from Honorable Governor. And now we invite Sri Chanchal Rana, IAS, District Election Officer and Collector Balangir, for the meritorious performance medal in silver. It is being given away to him in record of appreciation of his diligent and sincere efforts for adding more than 26,000 young electors in the electoral roll during the special summer revision 2024 in Balangir district. So, Sri Chanchal Rana, DO and Collector Balangir, has received this silver medal in appreciation to his commendable work. Sri Smruti Ranjan Pradhan, Collector Gajapati, is appreciated and awarded with this meritorious performance medal made in silver for his sincere efforts in improving the health of electoral roll by adding more than 9,000 young electors and more than 8,000 women electors in the electoral roll during the special summer revision 2024. So congratulating Sri Smruti Ranjan Pradhan, Collector Gajapati. And now we invite Sri Shavan Kumar Motiram, Electoral Registration Officer of 36 Bhogurai SN Sub-Collector Baleswar during the SSR 2024, who is now posted as ADM Padmapur. During SSR 2024, more than 4,000 female electors were added in the electoral roll, resulting in improvement of the gender ratio from 938 to 942. Sri Shavan Kumar Motiram, Electoral Registration Officer. Now, Sri Chinmay Kumar Acharya, Odisha Administrative Service Electoral Registration Officer, and he has contributed towards improvement in the gender ratio. The gender ratio of Ekamra constituency increased from 907 to 924. So, Sri Chinmay Kumar Acharya deserves commendation. We are just congratulating Sri Chinmay Kumar Acharya. Sri Vijayananda Sethi, Electoral Registration Officer, 67 Patnagarh Assembly Constituency, he is felicitated for his tireless efforts towards improvement in the health of electoral roll of Patnagarh Assembly Constituency, which resulted in overall improvement in the electoral profile of the district. Sri Vijayananda Sethi.
electoral registration officer, 67 Patnagara Assembly constituency. Now see, Dayamaya Party, Odisha Administrative Service Officer, Electoral Registration Officer, Titlagarh, and Kantambaji Assembly constituency is felicitated for his dedicated and sincere effort towards improvement in the health of electoral roll of Titlagarh subdivision, which resulted in the improvement of gender ratio percentage of young electors in the electoral roll. Then we invite Sri Prabhas Chandra Dandasena, Odisha Administrative Service Officer, Electoral Registration Officer Balangir 66 Louis Sangha, and Sub-Collector Balangir has been felicitated in recognition to his effort for adding 10,000 women voters and 12,000 young electors in the electoral roll of Balangir subdivision, which resulted in overall improvement in the electoral profile of the district. Sri Prabhas Chandra Dandasena. Now, I would like to request Honorable Governor and other dignitaries to distribute, to felicitate by certificate of presenting certificate of appreciation for by-election. Certificate of appreciation is awarded to Mrs. Aboli Sunil Naravne, District Election Officer and Collector Jharsuguda, in recognition to her dedicated, sincere and tireless efforts in conducting safe, accessible and inclusive by-election to the 7th Jharsuguda Assembly constituency. She has taken up many innovative voter-friendly measures. As a result, there was a good turnout during harsh summer. Now, certificate of appreciation to be given to Parmar Smith Purushottam Das, Superintendent of Police Jharsuguda, in recognition to his dedicated and innovative efforts for maintaining law and order and security arrangements and in ensuring incident-free by-election to the 7th Jharsuguda Assembly constituency. Certificate of appreciation is being given away to Parmar Smith Purushottam Das. Now we invite on stage Sri Kishore Chandra Swami, and the certificate of appreciation is awarded to Sri Kishore Chandra Swami, who is returning officer, 7th Jharsuguda Assembly constituency, and Sub-Collector Jharsuguda, in recognition to his efforts in conducting a transparent and error-free by-election to the 7th Jharsuguda Assembly constituency, which resulted in about 80% voters turnout. यापर परे वरेण्य अतिथि को निवेदन करिबो जो माने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के सहित एक ग्रुप फोटोग्राफ संयुक्त है. नाउ ऑनरेबल गवर्नर एंड ऑनरेबल डिग्निटरीज ऑन द स्टेज, they are giving a pose to the photographers for a group photo session with the awardees and with the officials, those who are felicitated by them. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी मान सहित वरीय अतिथि ग्रुप फोटो सेशन निश्चित रूपे समस्त को उत्साहित करुच्ची एवं स्मरणीय कृतज्ञता अर्पण कर समस्त को अभिनंदन जनाई मंच विदाय देवा सहित पूर्ववत आसीन होगापी वरीय अतिथि को निवेदन कर. Now I take the opportunity to request Honorable Governor to kindly administer voters' pledge. Honorable Governor will administer the voters' pledge in Hindi. तो आपको सबको हम लोग ये भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए शपथ लेते हैं कि हम अपने देश लोकतांत्रिक परंपराओं
are extremely grateful to Honorable Governor of Odisha for administering voters' place to all of us. Indeed, the gracious presence of Honorable Governor Sri Raghubar Das ji has added lustre to this National Voters' Day on its 14th edition. We are extremely grateful to you, sir. And now I take the opportunity to request you, sir, to kindly address the congregation. Honorable Governor of Odisha Sri Raghubar Das ji. राज्य स्तरीय मतदाता दिवस समारोह में मंच पे उपस्थित उड़ीसा राज्य के चुनाव आयुक्त श्री ए.पी. पाढ़ी जी, उड़ीसा के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री निकुंज बिहारी धल जी, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एन तिरुमाला नाइक जी, खोर्धा के कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री के सुदर्शन चक्रवर्ती जी एवं अन्य अधिकारीगण, आज सम्मानित हुए सभी डीओ और ईआरओ, नए मतदाताओं, प्रेस मीडिया कर्मियों तथा इस सभागार में उपस्थित सभी नए वोटर, आज 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना भी आज है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। लोकतंत्र के इस पवित्र उत्सव में शामिल होकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं सभी का आज अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने का मुख्य लक्ष्य लोगों को अपने मतदान के प्रति जागरूक करना और निष्पक्ष होकर मतदान करने को प्रेरित करना है। 18 साल के हो चुके सभी वयस्क युवकों को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना और अपने वोट के प्रति उन्हें जागरूक करना मतदाता दिवस मनाने का उद्देश्य होता है। मैं चुनाव को अधिक समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाने तथा चुनाव प्रक्रिया की अखंडता को बढ़ाने के दृढ़ संकल्प एवं लगातार प्रयासों के लिए भारत के चुनाव आयोग की सराहना करता हूं। 1951-52 में आयोजित पहले आम चुनाव में मतदाताओं की संख्या 17 करोड़ से कुछ अधिक थी। लगभग 45% मतदान हुआ था और वर्ष 2019 में आयोजित पिछले आम चुनाव में मतदाताओं की संख्या 90 करोड़ से भी अधिक थी तथा 68% से अधिक मतदान हुआ था। हमें उम्मीद है कि इस बार आम चुनाव में मतदान की प्रतिशत और ज्यादा बढ़ेगी। चुनाव आयोग सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि मतदाता किसी डर या पक्षपात के बिना चुनाव में भाग ले सके। कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में कई सुधार योजनाओं के साथ चुनावों का भविष्य वास्तव में गतिशील संभावनाओं से भरा है। विशेष रूप से मतदाताओं के कल्याण के लिए चुनावी प्रक्रियाओं में और सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के माध्यम से यह संभव हो सका है। यह खुशी की बात है कि नवीनतम चुनाव सुधारों में अब पात्रता रखने वाले युवा नागरिकों के लिए वर्ष में 4 बार पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गई। मैं उन युवा मतदाताओं को बधाई देता हूं जिन्होंने आज देश के नागरिक के रूप में नामांकित होने पर उनके मतदाता फोटो पहचान पत्र सौंपे गए। आप सब युवा मतदाताओं की नई पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं। मेरे लिए न्यू एज वोटर्स ही नहीं बल्कि आज की युवा नए भारत की अमृत पीढ़ी है जो आने वाले 25 वर्षों में देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी, भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाएगी। मुझे विश्वास है कि आप सब मतदान के महत्व के बारे में अपने संगी साथियों को जागरूक बनाएंगे।
यह भारतीय लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया को आपका अमूल्य योगदान होगा। यह हमारी चुनाव प्रक्रिया और हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक हमारी बहनें, हमारी बेटियां सक्रिय योगदान दे रही है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में उनकी सक्रियता एवं संख्या में और वृद्धि होगी। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाने की दिशा में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, दिव्यांगजनों, वयोवृद्ध मतदाताओं तथा ट्रांसजेंडर मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। प्रत्येक मतदाता को वोट देने के अपने अधिकार को महत्व देना चाहिए और यह महसूस करना चाहिए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान होना एक विशेष अधिकार है। भारत का लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़े तथा जीवंत और स्थिर लोकतंत्र के रूप में प्रसिद्ध है। मुझे पूरा विश्वास है कि निर्वाचन आयोग तथा अन्य सभी प्रतिभागियों के सम्मिलित प्रयास से हमारा लोकतंत्र और अधिक सुदृढ़ बनेगा। इसी विश्वास और कामना के साथ आप सबको पुनः एक बार बधाई। वंदे उत्कल जननी। जय हिंद। Indeed, we are extremely grateful to Honorable Governor Sri Raghuvar Das Ji for his address and for his kind presence on the state level 14th National Voters' Day. Now I would like to request Dr. N. Tirumala Naik, Additional Chief Electoral Official, to kindly present vote of thanks. आज 14तम जातीय मतदाता दिवस अवसर रे समस्त को राज्य समस्त भोटर मान को आम विभाग तरफ शुभेच्छा जनावुछि। आम यही कार्यक्रम मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल यही कार्यक्रम रही उपस्थित रही आम मान को दिग्दर्शन धन्यवाद जनावुछि आम विभाग तरफ एवं आम यही प्रोग्राम रे यही कार्यक्रम रे उपस्थित रही आम मान को उत्साह करथिबारु स्टेट इलेक्शन कमिशन को मु आम विभाग तरफ कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। यही कार्यक्रम जहाँ जातीय मतदाता दिवस राज्य स्तरीय जातीय दिवस आयोजन कराउछि प्रतिदिन हमको यही कार्यक्रम केंद्रीय सक्सेस हम गाइड करथिबारु हमर राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी को धन्यवाद अर्पण करछि। यही कार्यक्रम उपस्थित रही डीओ खुर्दा आमर विभिन्न वर्गर जो आछन्ति समस्त एटी बी रोस्टर आरंभ करी यंग वोटर्स, स्टेट आइकन्स, अवार्डीज, एसएलएमटीज, सीनियर ऑफिसर्स एवं प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समस्त को आम विभाग तरफ कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। आम यही कार्यक्रम को सफल सक्सेस करने आम ऑफिसर जी समस्ते टीम जो जो कार्य जो विभाग जहाँ काम देते समस्त जो सक्सेस कर समस्त को धन्यवाद जनावुछि। वंदे उत्कल। थैंक यू। राज्य स्तरीय जातीय मतदाता दिवस भारत समावेश आज आम सहित उपस्थित रही
ओडिशा महामान्य राज्यपाल महोदय एवं मान्यवर राज्य निर्वाचन आयुक्त सहित अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव और राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय गरिमा उपस्थित आम कृतज्ञता अर्पण करुछु एवं आपण मानकु अब किछ क्षण ए प्रेक्षालय भितर रहिबा पई विनम्र निवेदन करिबु कारण या परे विभिन्न प्रतियोगिता राज्य स्तरीय जातीय मतदाता दिवस अव्यवहित पूर्व विभिन्न प्रतियोगिता जहाँ होता से कृतित्व अर्जन कर विभिन्न विद्यालय और महाविद्यालय कृति प्रतियोगी मानक